Hello kids, how are you all? I hope you are doing well. Today we discuss chapter 8, Material and Solutions. Here is some warm-up questions. Given below are some substances, write D against ones which dissolve in water and ND against ones which does not dissolve in water. So you can do it by yourself as you already read about these things. Here is, let's know about states of matter, solvent, solute and solution, soluble and insoluble substances with example, methods of separation, sedimentation, descentation, filtration and evaporation. Okay student, here is matter. Matter is all around us. Matter defined as anything that has mass and takes up space. Solid, liquid and gas. Everything you see, touch and even breathe is made up of matter. Matter is made of atoms and the arrangement of atoms determines whether the substance is solid, liquid or gas. The particle of ice, water and steam are identical but arranged differently. That means student हमारे चारों तरफ मैटर है. बच्चे मैटर क्या होता है? जिसका कोई स्पेस होता है या वो क्या उसका कोई मास होता है. ठीक है, वो किस फॉर्म में हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, अब आपके जो सॉलिड और लिक्विड या फिर गैस है वो क्या है बच्चा? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है. अब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या होता है? लुक एट दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर वी हैव solid, liquid and gas. In this picture you can see here that the arrangement of solid atoms is in proper form, or in liquid it is also in proper form, but in gas they are on too much distance. Molecular arrangement of solid, liquid and gases. Do you know water is the only substance on the earth that naturally exists in all three states of matter, solid, liquid and gas. तो बच्चे वाटर एक ऐसा जो है आपका सब्सटेंस है अर्थ पे जो नेचुरली तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है. दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, हियर इज चेंज ऑफ स्टेट. मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर if heated or cooled. If ice, a solid, is heated, it changes to water, a liquid. This change is called melting. बच्चे चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है? जब कोई मैटर की स्टेट हम चेंज करते हैं वो तो या तो आप उसे हीट करेंगे या कूल डाउन करेंगे. जैसे अगर आप आइस को हीट करते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाता है, दैट इज लिक्विड, और इसको हम बोलते हैं बच्चा मेल्टिंग. द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफाइंग. इट इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग. और अगर लिक्विड से सॉलिड में चेंज करते हैं बच्चा, दैट इज फ्रीजिंग या फिर हम बोलते हैं सॉलिडिफाइंग. और ये अपोजिट प्रोसेस होता है किसका बच्चे? मेल्टिंग का. इफ वाटर इज हीटेड इट चेंज टू स्टीम अ गैस. अगर आप वाटर को हीट करते हैं वो बच्चा चेंज होता है किस स्टेट में? गैस स्टेट में, जिसको हम बोलते हैं स्टीम. दिस चेंज इज कॉल्ड बॉइलिंग. वाटर बॉइल्स व्हेन इट रीचेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द टेम्परेचर एट व्हिच वाटर टर्न्स टू स्टीम. Steam is an invisible gas. When it reaches the lid, it cools back to a liquid. That means बच्चा जो आपका वाटर जो बॉईल करना स्टार्ट करता है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करता है. दैट मीन्स उस टेम्परेचर पे आपका वाटर किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा. और जो स्टीम होती है वो इनविजिबल गैस है. ओके, even without boiling water in a kettle, some of water changes to gas. This is evaporation. लेकिन क्या होता है कि अगर आप जरूरी नहीं वाटर को बॉईल करो, नॉर्मल चेंज में भी आप देख सकते हैं कि वाटर किस में चेंज हो जाता है? गैस फॉर्म में, और वो होता है इवेपोरेशन. The process of evaporation is continuous one. और evaporation का process क्या होता है बच्चे? Continuous process होता है. Water that present as a gas in the air cools down and change into tiny drops of liquid water. This change from gas to liquid is called condensation. और जो आपकी एयर में जो प्रेजेंट होता है वाटर गैस की फॉर्म में और वो कूल डाउन होके छोटी छोटी ड्रॉप्स वाटर की जो बनती है, दैट इज कंडेंसेशन. व्हाट आर सॉलिड्स, liquid and gases? How can water be a solid, liquid and a gas? Why does my ice cream melt in the sun? Why does water starts bubbling in the kettle when it gets hot? What change of the state take place when a substance melts? So these are some questions you have to find the answers. जैसे क्या होता है बच्चे कि आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है सन में, या फिर आपका जो पानी है वो गर्म होता है तो उसमें बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं.
कैसे आपके सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करते हैं मेल्ट होने के बाद. Here is solute, solvent and solution. The solvent makes up the largest amount of a solution. It is the substance into which another substance dissolves water. Here is the solvent. So बच्चे solvent क्या होता है, वो large amount of solution को form करता है. And the second thing, जिसमें कोई substance dissolve होता है, that is solvent. The solute makes up a smaller amount of a solution. It is a substance that dissolves into another substance. Sugar is the solute here. So बच्चे solute क्या होता है, जो आपके किसी दूसरे substance में क्या हो जाता है, dissolve हो जाता है, that is solute. The more solute there is in a solution, the higher the concentration is. जितना ज्यादा आपका solute होता है solution में, उसकी concentration उतनी ज्यादा होती है. Here is example. The more sugar solute if added to water solvent, the higher the concentration the solution will be. That means अगर आप ज्यादा शुगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बच्चे हाई हो जाएगी. That means concentration means आपका सॉल्यूशन क्या होगा, उसमें शुगर ज्यादा होगी. ठीक है, do you know? If you pour a handful of salt into a full glass of water, the water level will actually go down. Rather than overflowing the glass, the salt molecules take up all the space between water molecules. इसका मीनिंग ये है बच्चा, अगर आप एक मुट्ठी भर के नमक डालते हैं किसी ग्लास में, तो क्या होगा कि जो आपका ग्लास का पानी है वो बाहर नहीं आएगा, उसका लेवल डाउन हो जाएगा. क्यों बच्चे? क्योंकि जितना भी स्पेस आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में था, उसको कौन फिल कर देंगे, आपके सॉल्ट मॉलिक्यूल्स. ओके, here is water is known as a universal solvent as it can dissolve many substances. Water क्या है बच्चा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्सटेंस जो है डिसॉल्व हो जाते हैं. Solutions are mixtures that look like one substance. It is the mixture formed when a solute dissolved in a solvent. और solution क्या है बच्चे, एक मिक्सचर है जो नॉर्मल दिखाई देता है एक सब्सटेंस की तरह, लेकिन वो किसका एक मिक्सचर होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का. Here is examples. The air we breathe is a solution of number of gases. वो एयर जिससे हम ब्रीथ करते हैं वो भी क्या है बच्चा, solution of number of gases. The fluids in our bodies are solutions that carry all kinds of essential nutrients and other materials. और जो हमारी बॉडी के फ्लूइड्स हैं वो भी बच्चा solution है. Fizzy drinks are solution of gas, carbon dioxide in water. The bubbles that come out when you open the bottle are actually carbon dioxide. और बच्चे जो फिजी ड्रिंक्स जो है, आप कोल्ड ड्रिंक्स जो है पीते हैं, वो क्या है बच्चा, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉल्यूशन होते हैं वो भी एक. ओके, here is we have an activity. Take 6 cups of water and try to mix sugar, salt, sand, vinegar and chalk powder separately in each cup. Then complete the table using your observation. So what you have to do, you have to take these things and observe the things and write in this table. Here is, in the above activity, we mix different substances with water. Answer the following questions. Which substance is the solvent in all the mixture? As you know, water. Choose an example of a solution that consists of solid solute and a liquid solvent. You can do these questions by yourself. Here is, the substances that form solution when they are mixed with water are called soluble substances. Some substances that are soluble in water are salt, shop, orange, juice, coffee, milk, etc. So बच्चे वो सबस्टांस जो आपके मिक्स हो जाते हैं किसमें, सॉल्यूशन में, that are soluble, उनको हम क्या बोलते हैं, soluble substances. The substances that do not form solutions when they are mixed with water are called insoluble substances. बच्चे वो सबस्टांस जो सॉल्यूशन को फॉर्म नहीं करते, जब वो वाटर में मिक्स होते हैं, वो insoluble substances होते हैं. Some substances that are insoluble in water are sand, oil, chalk powder, mud, wax, sawdust, etc. These are the substances जो insoluble हैं बच्चा. Okay, here is a miscible mixture. A miscible mixture is a mixture of two liquids that completely combines together to form one solution. For example, milk and water, lemon juice and water, etc. बच्चा मिजिबल मिक्सचर क्या होते हैं, जिनमें दो लिक्विड एक दूसरे के साथ कंप्लीटली कंबाइन हो जाते हैं और एक सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं. ओके, हियर इज an immiscible mixture is a mixture of two liquids that does not mix completely. These mixtures like oil and water will never mix together fully. The lighter liquid floats on the top of the heavier liquid.
Oil being lighter floats on the surface of water. So बच्चा immiscible liquids का जो mixture होता है वो कैसा होता है? दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है? Do you know carbon beverages like Coca-Cola, Sprite, etc. are made by dissolving carbon dioxide gas into liquid at high pressure. बच्चे जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया जाता है एट हाई प्रेशर. ओके, हियर इज saturated solution. In this experiment, the solution reaches the point at which it cannot dissolve more solute or sugar, and the sugar you add sinks to the bottom in solid form. This is now a saturated solution. So बच्चे क्या होता है जब आप किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड करते जाते हैं वो एक लिमिट के बाद उसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, और जब वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है उस सिचुएशन पे आप अपने सॉल्यूशन को बच्चा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. When no more solute can dissolve in a solution, we say it is a saturated solution. और जब कोई solute dissolve नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? Saturated solution. An unsaturated solution is one where it is possible to dissolve more solute in the solvent. और एक unsaturated solution बच्चे वो होता है जब possibility होती है उसमें और solute के add होने की. Okay, here is we have check and mate. As we already read about these things, so you can do it by yourself. Now we have methods of separation. Separation of soluble substances. The first one is evaporation. Evaporation is the best way for separating a mixture, solution of soluble solid and a solvent. The process involves heating the solution until the solvent evaporates, turns into gas, leaving behind the solid residue. Salt is obtained from seawater by the process. Seawater evaporates due to the heat of the sun and salt is left behind. Here is a simple example involving a mixture of salt and water. Student, evaporation क्या है? एक मेथड है सेपरेशन का दो सोल्यूबल सब्सटेंसेस को. कैसे हम करते हैं? देखो, जैसे वाटर और सॉल्ट मिक्स कर लिया आपने, उसके बाद जब आप उस सॉल्यूशन को हीट करेंगे बच्चा, कुछ टाइम के बाद आपका वाटर क्या इवेपोरेट हो जाएगा और आपका जो सॉल्ट है वो रेजिड्यू बन जाएगा. और इसी प्रोसेस से हमें जो है सॉल्ट मिलता है हमारे सी वाटर से बच्चा. लुक हियर, लुक एट दिस पिक्चर. सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. देन द सॉल्यूशन इज हीटेड. सॉल्यूशन इज हीटेड टू बॉइलिंग पॉइंट फॉर द लिक्विड टू इवेपोरेट. हम कब तक हीट करेंगे? जब तक हमारा वाटर इवेपोरेट नहीं होता. सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट रिमेन्स आफ्टर लिक्विड इवेपोरेट्स. और ये सॉलिड पार्टिकल्स किसके लेफ्ट होंगे बच्चा? सॉल्ट के, क्योंकि आपका लिक्विड क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया. ओके, here is separation of insoluble substances. Insoluble substances can be separated from a liquid by the process of filtration, sedimentation and descension. Here is filtration. The process involves the use of filter paper placed in a filter funnel. The funnel is placed in beaker and the mixture of water and sand is poured into the funnel. The liquid part drains through the filter paper into the beaker, leaving the solid sand particles trapped in the filter paper. In filtration, the liquid part collected is called the filtrate, and the solid bit that remained on the filter paper is called residue. So, student, filtration में क्या होता है बच्चा? हमारे पास एक फिल्टर पेपर होता है जिसे हम फिट करते हैं अपने फनल में, फिल्टर फनल में, और फिर जब हम सॉल्यूशन उससे पास कराते हैं तो जो आपका लिक्विड पार्ट होता है आपके बीकर में कलेक्ट हो जाता है, और जो रेजिड्यू दैट मींस जो सॉलिड पार्ट है वो फिल्टर पेपर पे ही क्या हो जाता है? वहीं पे लेफ्ट आउट होता है. ठीक है, सो वो जो लेफ्ट आउट पार्ट है सॉलिड का उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं. हियर इज an example of such a mixture is sand and water. Filtration is used in water treatment plants where water from the river is filtered to remove solid particles. और यहाँ पे हम क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मिक्सचर है सैंड एंड वाटर का. ओके स्टूडेंट, लुक हियर, लुक एट दिस पिक्चर. मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड. इन द सेकंड स्टेप, सैंड विद वाटर फिल्टर पेपर. अब वो जो वाटर वाला सॉल्यूशन है उसे किससे पास कराओगे बच्चा? आप फिल्टर फनल से जिसमें एक फिल्टर पेपर लगा है. नाउ लुक हियर, द residue in the filter paper and the liquid is filtrate. Get it, students? Here is sedimentation and descension. If the mixture of insoluble impurities, example, sand and water, is allowed to stand undisturbed in a beaker, after some time the sand settles down
at the bottom of the container as sediment. This process is called sedimentation. इसका मीनिंग क्या है बच्चे? सपोज आपके पास पानी है और उसमें बहुत सारी मिट्टी मिक्स हो चुकी है, आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, रेस्ट, दैट मीन्स उसको आप हिलाएं डुलाएं नहीं, तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद मिट्टी जो है वो आपके बॉटम पे कलेक्ट हो जाएगी, उसको बच्चे हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्स। और वो जो आपको ऊपर वाला जो पानी है उसको आप दूसरे बर्तन में या दूसरे बीकर में जो है कलेक्ट कर सकते हैं, सो दैट इज sedimentation. Clean water obtained from the process of sedimentation can then be poured out into a separate container without disturbing the sediment. This process is called descentation. अब बच्चे जो हम पानी कलेक्ट करते हैं दूसरे बीकर में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसेंटेशन. ओके, लुक एट द पिक्चर, सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन. Here is, we have check and mate, as we already read about these things, so you can do it by yourself. What we learned in this chapter, now we will discuss it in a nutshell. Here is, a solution is a special kind of mixture. Like all mixture, it consists of two or more substances mixed together. So बच्चा solution क्या होता है? एक special kind of mixture होता है जिसमें बहुत सारे जो है mixture जो consist होते हैं दो या दो से ज्यादा. A mixture is made up of solvents such as water in which one or more solutes have been dissolved. और सोल्यूशन क्या होता है? किससे बना होता है बच्चे? सॉल्वेंट जैसे वाटर और एक या एक से ज्यादा सोल्यूट होते हैं. इन अ सॉल्यूशन द सोल्यूट लुक्स एज इफ इट डिसअपियर्स इनटू द सॉल्वेंट. दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट बिकम क्लोजली मिक्स्ड. तो बच्चे आपका सोल्यूशन क्या है? अगर सपोज आपको उसमें सॉल्वेंट जो है और उसमें सोल्यूट जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं अलग अलग, दैट मीन्स वो क्लोजली मिक्स हो गए. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन बट द मोस्ट वेल नोन ones are mixtures of solid and a liquid such as sugar and water. So बच्चे बहुत सारे solution होते हैं लेकिन मोस्टली हम किसके बारे में बात करते हैं? सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर जैसे sugar and water. Not all the substances dissolve in water. Those that dissolve are called soluble substances. Those do not dissolve are called insoluble substances. So बच्चे जो substance water में dissolve करते हैं वो soluble होते हैं, जो नहीं करते हैं वो insoluble होते हैं. A soluble solid can be separated by heating so that the solvent evaporates. The dry solute will be left behind. और एक soluble solid को हम separate कर सकते हैं heating के through, क्योंकि solvent evaporate हो जाता है और जो dry solute है वो आपके पास जो है residue की form में left होता है. An insoluble solid can be separated from a liquid by filtration, sedimentation and descentation. तो आपका जो इनसॉल्युबल सॉलिड है उसे आप सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, सेडिमेंटेशन से और डिसेंटेशन से. ओके, हियर इज सम कीवर्ड्स. आइडेंटिकल, एग्जैक्टली अलाइक, concentration, the amount of substance solute present in a given volume of solvent or solution, residue, leftover. Thank you students, we will meet again in the next chapter.